Now direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the board, directed inward. ये क्रॉस से दिखाया है. क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन. Let us suppose the magnetic field is B, represented by B vector. Now, if a charge is moving perpendicular to this field, we can assume either it may enter from this direction or it may enter from this direction. It may enter from this direction. किसी भी स्थिति में कैसा होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के. तो जब चार्ज पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है और सपोज वो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम मान लेते हैं द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू r. वेलोसिटी उसकी कैसे मानते हैं, वो कैसे घुसा है, इट इज एंटरिंग इन दिस वे. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. नीचे से आएगा मूविंग विद वेलोसिटी टू मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो जब ये एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, it is moving along anti-clockwise direction. What is the direction of the force? The force will act along this. अभी केवल 11th क्लास का टाइम है. लेफ्ट जाओ और वहां में से इसको वर्क करते हैं. सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए चार्ज पार्टिकल को क्या चाहिए, चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज Fc. It is provided by the magnetic force acting on the charged particle. Now, what is the value of the centripetal force? It is given by mv square upon r. This is equal to, ये किसके द्वारा मिलेगा? It will be obtained by the magnetic force. So, magnetic force is given by QVB. Now, this is the magnetic force. So, from this equation you can get the value for the radius of this path. R is equal to mv divided by qb. Expression for the radius is obtained as mv divided by qb. So what are the factors upon which this radius depends? It depends upon the mass of the particle, which is of course constant for a particular particle. Then the value of the charge. So this is q by m or m upon q, ratio of mass to charge, which is a constant term for a particular charge. Magnetic field B. This is also uniform. So magnetic field is constant here. The thing is that velocity is related with the radius. So as you go on increasing the velocity of the particle, the radius will also be larger for a particular particle. Now, many different types of particles which are projected in this magnetic field. It may be a proton, it may be an alpha particle, or it may be an electron. So depending upon the values of their mass and their charge, the radius of the circular path followed by them in the magnetic field will change. We can also find out this time taken to complete one round of the circular path is called as the time period T. So expression for the time period can be obtained as, what is the formula? 2 pi r upon velocity. So from that expression, for the resistance, substituting the value of r, this is 2 pi into mv upon v into qb. Substituting the value of r from this equation here, what do we get? V is cancelled out. So the expression for the time is equal to 2 pi m upon qv. Time period is given by the formula 2 pi m upon qb.
time period which is 2 pi n divided by qb, it is very clear that this time period is independent of दो फैक्टर्स जो वेरिएबल होते हैं v and r. So time period is independent of the velocity and the radius. ये कांस्टेंट हो गया टाइम पीरियड. देखो 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, t q is also constant, and of course this magnetic field is uniform. So everything on the right hand side is constant for a particular particle. You have to find out the ratio of radii when a proton and an alpha particle enters in same field V. ठीक है? We will understand one example. We have to find out the ratio of radii when a proton and an alpha particle enters the same magnetic field V. जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके का रेशियो निकालने का, तो वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस. एक्सप्रेशन क्या है? r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb. नाउ राइटिंग दीज एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सो rp, दिस इज द रेडियस फॉलोड बाय प्रोटॉन इनटू mass of proton, velocity of proton, mass charge of proton, and magnetic field is of course the same. What is the condition given to us that the velocity, the particle will enter the same magnetic field? So B is same for both of the particles, proton and alpha. Similarly, we can write down the expression for the radius of alpha particle. It is given by mass of alpha particle, velocity of alpha particle divided by charge of alpha particle multiplied by v. This is our equation number 1 and this is our equation number 2. So writing these values in their respective equations of radii, now we will find out the ratio. From expression 1 and expression 2, let us divide 1 by 2. What do we get? Rp divided by R alpha is equal to MP Vp upon Qp multiplied by V, whole divided by M alpha V alpha upon Q alpha into V. So from here this V term will be cancelled. Now what is this quantity? MP Vp, it is momentum of the charged particle. अब इसके इतने क्वेश्चन के बाद आपको कोई ना कोई एक कंडीशन दी जाएगी. या तो आपको लिखा जाएगा कि velocity of the two particle is same or enters the magnetic field with same velocity or with same momentum or with same kinetic energy and so on. One more condition will be given to you in the question. Accordingly you will adjust the values. अगर same momentum है तो MPVP is equal to M alpha V alpha, ये कैंसिल हो जाएंगे और ratio of the charges आ जाएंगे. Suppose the particle enters with same momentum. तो रेशियो क्या आएगा? Rp upon R alpha is equal to this, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों. क्या आएगा?
जो रेशियो है इनका रेडियाई का वो रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ द चार्जेस होगा। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो क्या होता है? प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1 यूनिट, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का सिंबल 1H1 है, अल्फा पार्टिकल का सिंबल 2 4। तो चार्ज कहाँ से आता है? ये वाली वैल्यू से। कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पर डबल चार्ज होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो वी विल 2 यूनिट चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल एंड 1 यूनिट चार्ज फॉर प्रोटॉन। So the ratio comes out to be as, you can write the expression Rp is to R alpha is equal to 2:1. This is one situation. Similarly, you can apply it to other situations also. You can apply it for other situations also. Suppose velocity is same. In the next condition, if velocity is same, so let us discuss that case also. If the particle enters with the same velocity, so ratio of radii when a proton and an alpha particle enters in same field with same velocity. अगर velocity भी समान है तो v alpha is equal to vt. Velocity of alpha particle is equal to velocity of the proton. So the expression for the radii will be Rp upon R alpha is equal to mass of proton multiplied by velocity of proton whole divided by Qp into B divided by M alpha V alpha upon Q alpha into B. Now as velocity of proton is equal to velocity of alpha, these terms will be cancelled and B will also be cancelled. So equation becomes Rp upon R alpha is equal to Mp upon Qp into M alpha into Q alpha upon M alpha. Therefore, what is the ratio? Rp upon R alpha is equal to mass of proton divided by mass of alpha particle multiplied by charge of alpha divided by charge of proton. So you can substitute the values now. What is the ratio of these masses? Expression में क्या है? चार्ज का रेशियो 1:2 है, मास का रेशियो 1:4 है प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल में। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1 टाइम रखेंगे, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम्स एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 टाइम. सो व्हाट इज द आंसर? द रेडियल रेशियो ऑफ Rp is to R alpha is equal to, यहाँ से क्या आएगा? 1:2. So in this way we can solve the questions of ratios of radii or the ratios of kinetic energy, ratio of momentum. इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं.